Yes, hello everyone, good morning. So retake लेना पड़ गया हाँ. Yes. So guys, let's start today's class. Like in the last class, we have finished with the percentage and all the topics of percentage along with compound interest. That was a very interesting topic. And guys, today we are going to extend that topic further because profit and loss is the next topic, which is again the application of percentage only. Fine, here so many questions will be solved with the help of percentages. Suppose that, guys, think on it. If I talk about, let's say 10% profit, suppose that this is the pen, right? This is the pen. If a pen is being sold at 10% profit, right? So 10% profit means what? 10% profit means the article has been sold at 110% of its cost price. Everybody clear? 10% profit means what? The article has been sold at 110% of its cost price. Correct? So again, it is the application of percentage only. Fine, everyone. So let's talk about this topic. Let's talk about the terminologies first. Right? What are the terms that we are going to use in this chapter? The terms are cost price, selling price, profit, loss, marked price, discount. Right? Profit, loss, marked price, discount, cost price, selling price. See everybody, cost price everybody knows, selling price everybody knows, profit everyone knows, loss everybody knows. Marked price or list price or MRP. Everyone, what is marked price? Marked price is the price that is written on the product. Right? Everybody clear? This is marked price or MRP, maximum retail price. And discount. Discount is the concession that customer gets on MRP. Right, everybody? And friends, discount is always given on MRP. Please mind it. Discount is always given on MRP. Right? MRP may be the final selling price or may not be. I repeat, MRP may be the final selling price or may not be because the thing is, over MRP, the scope of bargain is always there. Right? So MRP may be the final SP or may not be. Right? Discount is always given on MRP, guys. Okay? चलिए. So ये सारी चीजें आपको पता है basically. And profit or loss is always calculated with respect to cost price. Everybody? You know it very well, right? Profit or loss is always calculated with respect to CP. Right? अच्छा, sometimes क्या होता है कि shopkeeper or a person, sometimes they commit a mistake. They calculate their profit or their loss over the selling price. So that is considered to be a mistake, but sometimes questions are also based on that mistake also. Right? इस बात का ध्यान रखिएगा. ठीक है? And mathematical interpretation of profit or loss, this we have discussed already. You just read it and फिर उसके बाद we have to move to the next question, to the examples. Yes, everybody? Shall we move, guys? All of you? एक question देखिए जरा. Questions are based on profit and loss, CP and SP, simple questions, right? Let's start the simple questions. If the cost price is ₹60, profit percentage is 20, find out the selling price. Guys, quick, ऐसे answer बताइए जरा. Yes, I repeat the question. If the cost price is 60, profit percentage is 20, find out the selling price. 72, everyone? Fine? Okay. Simple question, guys. Online students, feeling comfortable? Great. Next question. Yes. Find out the selling price if the cost is ₹80 and loss percentage is is 15%. What is the answer? 71. अच्छा. Everyone, what's the answer? ऐसे ही करिए. Put down your pen, all of you. What's the answer? Yes. 68. See, all of you. 15% of 80. 15% of 80 is 12. देखिए, एक बात आपको बताता हूँ. इस चीज का ध्यान रखिएगा. 15%, think on it, guys. Think logically. 15% is what? 10% plus 10% divided by 2 actually. Yes or no? Right. So 10% of 80 is 8 and plus half of it.
So 8 plus 4 is 12, right? Guys, it is clear. So 15% is equal to 10% plus half of 10%. So obviously 12 rupees is 15%. So 80 minus 12, that is 68. Or you can think like this also, 15 into 8, divided by this. Correct everyone? So 15 8s are 120. ये भी आपको समझ में आता है, ठीक है? तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है? Anyways, चलिए हटाया जाए इसको. Now guys, read this question. The question says find out the cost price, find out the CP. If SP is rupees 80 and profit percentage is 25%. Everyone, if SP is rupees 80 and profit percentage is 25%. कैसे करेंगे? How to approach this question guys? मुझे आप approach बताइए, मुझे answer मत बताइए. How to approach this question everyone? The question says if profit percentage is 25 and selling price SP is 80, then what is CP? See, all of you, this question can be solved by several other methods, right? मैं आपको बताता हूँ कैसे. सबसे पहले तो एक बात बताइए, profit percent is 25% means what? Means SP is equal to 125% of CP, right? SP is equal to 125% of CP, guys, yes or no? And SP is given as what? So 125% of CP is equal to 80, then you need to find 100% of CP is what? Correct guys? So देखिए, what is the relationship? 5:4. Guys, yes or no? So try to maintain 5:4 here also. क्या आंसर आएगा बताइए? 64. Yes. Right. So while reading the question, you can solve it. Correct everybody? Provided basic knowledge होनी चाहिए आपको कि actually profit loss काम कैसे कर रहा है. Or one more thing can be used. 25% is what? 1/4. Correct? Right? So you assume the CP as 4, right? Profit, percentage profit. Profit will be what guys? 1/4 of this will be 1. So SP will be what? SP will be 4 plus 1, that is 5. 5 is given as 80. Then you need to find the value of 4. Guys, check it out. This is again 5:4, right? Check it out guys, fine. Okay? So everything is same actually, right? Right? You may go from any direction, but you will reach there only. All of you fine now? Clear? Okay. Let's move to the next question. Yes. A very logical one guys. A very logical one. Think on it. Question says, a man bought some toffees at 3 for a rupee. How many for a rupee should be sold to gain 50% on the entire transaction? Everyone clear with this? A man bought some toffees at 3 for a rupee. How many for a rupee should be sold so that he gained 50% on the entire transaction? Guys, think on it and tell me the answer. There is no need of using mathematics. Just you have to apply your brain, apply your thought process. Yes, what is the answer? Yes, क्या होना चाहिए? Everyone, what will be the answer? All of you? What will be the answer guys? देखिए, everyone, just think on it. Question is what? A man bought some toffees at 3 for a rupee. You are getting the meaning of this.
कि एक बंदा 1 रुपए की 3 टॉफी लाया है, ठीक है, अब 1 रुपए की कितनी बेचे कि उसको पूरे ट्रांजैक्शन में 50% का प्रॉफिट हो। मतलब ये कहने का है कि एक शॉपकीपर है, वो 1 रुपए के 3 के हिसाब से कुछ टॉफी लेके आया मार्केट से, अब 1 रुपए की कितनी बेचे कि पूरे बिजनेस में उसको 50% का प्रॉफिट हो जाए। दिस इज द क्वेश्चन, राइट? सो थिंक ऑन इट गाइस कि you just assume a very trivial case that the investment in the business is just 1 rupee, right? Investment in the business is just 1 rupee. If he has invested 1 rupee in the business, he purchased 3 toffees out of it, fine. If he wants 50% gain in his business, it means the quantity that he has purchased for 100 paisa, he will have to sell that quantity for 150 paisa, yes or no? Right? So 3 trophies he will be selling for 150 paisa. So he will be selling 1 toffee for 50 paisa. So 1 रुपए के कितने हुए? No. So the answer is 2 for a rupee. Everybody clear? So सिर्फ सोचिए आप इसको बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सो हियर अब इसको क्या कर सकते हैं? लेट CP is equal to 100 पैसा, फाइन, मतलब इट इज गिवन ना, सो SP हैज टू बी 150 पैसा, राइट? 150 पैसा फॉर 3 टॉफीज एक्चुअली, राइट? सो 3 टॉफीज must be sold for 150 paisa, so 1 toffee must be sold for 150 divided by 3 which is 50 paisa, correct? So 100 पैसे का आप कितना, मतलब I mean 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचोगे? 1 रुपए की 2 बेचोगे, that's it. Guys, getting it? You need to sell 2 for rupee 1. Guys, yes or no? All of you? Is it clear? Everybody? Is it clear? Comfortable? Huh? Comfortable? Okay. Shall we move? Huh? All right. चलिए. Now friends, so again the next question. इसको आप बताइए, quick. All of you quick. Tell me the answer quick. Quick. Yes everyone? Quick. 5 is the answer. See, the thing is, he wants 20% gain. So obviously 6 toffees he has to sell for 120 paisa. So the SP of 1 toffee will be 20 paisa, right? So for 100 paisa he will be selling 5 toffies. Guys, yes or no? Yes. Here the answer is 5. आपको नोट करना है तो आप कर लीजिए. The answer is 5. Okay. That's great. Everyone is saying 5 toffees, 5 toffees, 5 toffees. Okay, that's great. ठीक है ना? आगे बढ़े. अब आप ही बताएंगे सारे आंसर्स, मैं कुछ नहीं बताऊं. Right. चलिए. So let's move guys to the next question. The next question says, yes, Dinesh purchased some lemons. He purchased 3 lemons for rupees 2. He sold all the lemons and earned 25% profit. At what rate did he sell all the lemons? Everybody think on it and tell me the answer. All of you quick. Quick. क्या 75? वो पूछ रहा है कितने रुपए के कितने बेचे जाएं? 75 पैसा. जबरदस्ती. हाँ, क्या होगा आंसर? All of you, at what rate did he sell all the lemons? At what rate means आप समझ रहे हैं, जैसे कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में 3 टॉफीज फॉर रुपी 1 या 2 टॉफीज फॉर 1. सो यहाँ पे क्या होगा, क्या बोलेंगे आप? थिंक ऑन इट. ओहो, all of you online students, 6 lemons for rupees 5. अच्छा ठीक है. उज्जवल, 6 lemons for rupees 5. मैं चेक करता हूँ. देखिए गाइस, मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज CP? व्हाट इज CP? 2 rupees. व्हाट इज प्रॉफिट? He wants a 25% profit. 25% means 1/4.
So the quantity that he purchased for rupees 2, he will sell that quantity for 2.5 rupees. Yes or no? For 25% gain, he will sell that quantity for 2.5 rupees, right? So SP has to be 3 lemons for rupees 2.5. ठीक है, 2.5 रुपए के 3 नींबू बेचने पड़ेंगे, और आप इसको डबल कर दीजिए, 6 लेमन्स, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, 6 लेमन्स फॉर रुपीज 5, 5 रुपए के 6. अगर वो इस तरह से बेचेगा तो पूरे ट्रांजैक्शन में उसको 25% का गेन होगा. गाइज यस और नो? सी गाइज, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली यू हैव टू एडजस्ट योर आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस. So you may get this option also, or you may get this option also. नहीं, ये देखिए, ये ऑप्शन में आपको मिल भी सकता है और ये भी मिल सकता है. 3 for rupees 2.5 और 6 for rupees 5, right? Okay. हाँ हाँ, yes. Guys clear? आदित्य, आप छोटा करिए थोड़ा प्रोसेस, ठीक है? हाँ नहीं 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 नहीं, उससे नहीं होगा. 225 है नहीं, 2.5 है ना, राइट? 2.25 नहीं है, 2. मुझे एक बात बताइए, 2 का 25% कितना होगा? 50 पैसा होगा ना. तो अब अगर आपको 25% का गेन चाहिए, तो द आर्टिकल दैट यू हैव परचेज फॉर 2 रुपीज, यू विल बी सेलिंग दैट आर्टिकल फॉर 2.5 रुपीज. यही तो लिखा हुआ है मैंने, और मैं सारे क्वेश्चंस में वही कर रहा हूँ. आई एम डूइंग द सेम थिंग इन ऑल द क्वेश्चंस, राइट? राइट? ओके, शैल यू मूव? चलिए करिए जरा इस बार. यस, बिल्कुल आराम से. रतीश परचेज्ड सम लेमन. सभी लोग लेमन ही खरीद रहे हैं यार आजकल. चलिए, यस गाइस, बताएं जरा. हाँ जी, व्हाट्स द आंसर? क्विक. क्या हुआ? नहीं हो रहा है? एवरीवन नॉट एबल टू सॉल्व? टेल मी द आंसर क्विक. अब कुछ भी आ रहा है, अब करना पड़ेगा आपको. देखिए, लिखा हुआ है रतीश परचेज सम लेमन, ही सोल्ड ऑल द लेमन्स. ही सोल्ड 8 lemons for rupees 7 and earned 40% profit. See, all of you, tell me one thing. His SP is rupees 7, but with 40% profit. It means this is 140% of your CP. 140% of your CP is 7. Right? तो 100% और 100% की भी जरूरत नहीं है, 150% की जरूरत है ना, सीधे सीधे. So 150% of CP will be what? Rupees 7.5. ठीक है? तो actually he needs to sell 8 lemons for 7.5, और आप इसको डबल कर दें. So he needs to sell 16 lemons for rupees 50. देखिए, ये इसका क्या है? राइट? ओके, ट्राई टू फाइंड द रिलेशनशिप गाइस. राइट? तो एक्चुअली 15 रुपीज के 16 लेमन्स उसको बेचने होंगे.
थिंक ऑन इट गाइज, एक आम इंसान की तरह सोचिए आप लोग। पहले मैं आम आदमी बोलता था, जब से केजरीवाल ने पार्टी फॉर्म कर दी तब से मैं फिर आम इंसान कहने लग गया हूँ, राइट? ओके, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ। यस गाइस, इट इज क्लियर नाउ। ओके, यस, ऑलराइट, शैल वी मूव नाउ? मानवेंद अभी ठीक है? सोचिए चीजों को यार, कितना सिंपल है यार, देख लो। राइट, ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब इसको आप करें, थोड़ा सा डेटा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है अब इसको आप करें। क्या होगा आंसर? बता रहे हैं? 77 lemons for 80 rupees. Okay. See, all of you, देखिए जरा. Question says Keshav purchased some lemons. Okay. And he sold all the lemons. He sold 11 lemons for rupees 10 with 30% loss. So 70% of CP is equal to rupees 10. ठीक है? Question says 20% loss. So obviously we need to find 80% of CP actually. So this is 10 by 70 into 80. Correct guys? So this is rupees 800 by 70. Or you can say 80 by 7. Correct? So for 20% loss, lemons कितने हैं? 11. For 20% loss, 11 lemons must be sold for rupees 80 by 7. You just take 7 here. So 77 lemons must be sold for rupees 80. That's it. Guys, yes or no? Right? Yes, everybody, clear. Very good. How simple the question is, right? Aditya? नहीं, 80 by 7 तक भी छोड़ा जा सकता है इस क्वेश्चन को, लेकिन एक्चुअली क्या होगा कि ऑप्शन शायद कुछ इस तरीके से होंगे एग्जाम में, राइट? हालांकि अब तो वो ज़माने चले गए, अब तो ये सब होगा ही नहीं, अब तो Yes, everybody. Shall we move to the next question, guys? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes. Guys, read this question. The question says, by selling 12 toffees for ₹1, a man lost 20%. How many for ₹1 should he sell to gain 20%? Right? By selling 12 toffees for ₹1, a man lost 20%. How many for ₹1 should he sell to gain 20%? See, all of you, a man lost 20% for ₹1, right? So 80% of CP is equal to what? 100 पैसा or ₹1? हाँ, मैं 100 पैसा लिख रहा हूँ, ठीक है, चलेगा? Everybody clear? To gain 20%. To gain 20% means 120. हाँ. So 120% of CP. Guys, this is 2:3. See the relationship, right? 2:3. 40 into 2, 40 into 3. So this will be what? 150. Everyone? Right? 2:3 is the relationship. Fine. Now, all of you,
to gain 20%, बल्कि गेन लिख दिया मैंने, to gain 20%, 12 toffees must be sold for 150 पैसा, correct guys? 150 पैसा में we need to sell 12 toffees, guys, yes or no? ये सिचुएशन है ना? हाँ, क्वेश्चन सेज 100 पैसे की आप कितनी बेचें, लिखा हुआ है ना, हाउ मेनी फॉर अ रुपी शुड बी सोल्ड. सो 100 पैसे में आप कितनी टॉफी सेल आउट करें? सो गाइस दिस इज 3:2, so this is what, 3:2, try to maintain, so 4:3, 4, yeah, 8. The answer is 8 toffees. Guys, done or not? Clear? Okay. So you just think on it, question will be solved. आप सिर्फ सोचते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. राइट? ओके. Any doubt on it? No? All right. How simple the questions are. Right? चलिए. Okay. Everyone, shall we move to the next question? Okay. चलिए. After this, करिए जरा, इसको आप करिए प्लीज. Tell me the answer. This is not that easy value. आपको थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा. $30 toffees for 1 rupee. Yes, good. 30 toffees for 1 rupee. Yeah, correct answer. See, all of you, a man sold 50 toffees for a rupee, right, and lost 25%. So 75% of CP is equal to 100 paisa. Sorry, 100 paisa, right? Clear? So they are asking 25% gain. So 125% of CP, this is 3/5, everybody, sorry, 3/5, correct? So obviously this is 100/3 into 5, correct? So you can say 500/3 paisa. Everyone fine now? So a man sold 50 toffees for a rupee. So to gain 25% for 500/3 paisa, we need to sell 50 toffees. Correct guys? So for 100 paisa. Correct? ठीक है? So देखिए 500 पैसा की 150 आएंगी. मैं 3 को उधर कर दूं, 5 रुपए की 150. तो 100 रुपीज की 150/3 150/5 हो जाएगा, दैट इज 30. ठीक है, करेक्ट गाइस, यस और नो? राइट. 30 टॉफीज फॉर 1 रुपए, फॉर 1 रुपी. Everybody clear? See, these are actually very basic questions of profit and loss. Very basic questions, right? But आपका जो बेस है वो यहीं से बिल्ड होगा, आपका थॉट प्रोसेस यहीं से बिल्ड होगा, right? Which is the requirement of the question. Yes, all of you, shall we move? Okay, चलिए. Simple question. Tell me the answer. थोड़ा सा डेटा चेंज हो गया है.
Simple question here. Tell me the answer, guys. $18, 1/8. Yes, I think this is the correct answer. Yes, all of you. Ginny is saying 18. Okay, 18 I think is the correct answer. देखिए मैं करता हूँ. All of you. Anulekha is also saying it is 18. All right. Guys, देखिए मैं करता हूँ. See everyone. Question says by selling 45 lemons for ₹40, a man lost 20%. देखिए 80% of CP is equal to 40 rupees. Right. Guys, what is the relationship? Half. Huh? So question says 20% gain. So 120% of CP. So half of this 60 rupees. हाँ ठीक है. देखिए to gain 20%, 45 lemons must be sold for ₹60, right? So for ₹60, 45 lemons must be sold. Correct? अब क्वेश्चन में कह रहे हैं for ₹24. Guys, just think on it. Check out the relationship. This is 4:3. So try to maintain 4:3 here also. 6 into 4, 6 into 3. Right? Guys, clear? Right. I just check out the ratios all the time. I don't try to do the calculations. Right? Okay. चलिए. Shall we move, guys? Everyone? आगे बढ़े हम लोग. चलिए जरा. हाँ देखो रेशियो तभी निकलेगा जब कुछ कॉमन होगा उनके बीच में, तो भाई रेशियो निकलेगा ही नहीं. भाई रेशियो का मतलब क्या होता है? राइट. ठीक है. ओके. यस एवरीवन, लेट्स मूव. चलिए. Quantity should be same to calculate the profit or loss. Yes, obviously. Guys, just read this question. The question says a man bought 6 toffees for 10 rupees. ठीक है, एक कोई शॉपकीपर है, उसने 6 रुपए की 10 टॉफी खरीदे, बट 4 रुपए की 6 टॉफी के हिसाब से बेच दी. फाइंड आउट हिज गेन और लॉस परसेंटेज. ठीक है. देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें? एट द टाइम ऑफ बाइंग he is buying 6 toffees for ₹10. ठीक है, ये है at the time of buying. हाँ, and at the time of selling he is selling 4 toffees for ₹6. Correct? See everyone, when you have to compare two things, then at least either the price has to be equal or the quantity has to be equal. Right? So here always try to equate the quantity. Right? So for this multiply this number, both the numbers with 4, right? And multiply both the numbers with 6. Guys, clear? Right? So here when you multiply both the numbers with 4, so this will become 24, this will become 40. All of you? Correct? And when you multiply
6 with both the numbers. So this will become 24, this will become 36, right? Sorry. Everybody clear? So now it is very clear. The question is saying he bought 24 toffees for rupees 40, but he sold 24 toffees for rupees 36. What is this, guys? This is the loss of 4 rupees with respect to 40 rupees, right? Because his CP will be considered as what? 40 rupees, and his SP will be considered as rupees 36. Clear? So this is the loss of 4 rupees, means 10% loss. Clear, guys? Right? Here his CP would be considered as rupees 40, his SP would be considered as rupees 36. So this is the loss of 10%. Right? Guys, done? Okay. All right. All right. Let's move, guys. ध्यान रखिएगा 10% loss, हाँ? This is the final answer. Okay. इसको आप करें और मुझे आंसर बताएं. Mukesh purchased some lemons, 7 for rupees 9. He sold 11 for rupees 13. अच्छा. 7 for 9, 11 for 13. हाँ. 11 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 7 का इधर कर दीजिए. So this is 77 for 99, and this is 77 by 91, right? So his CP will be what? 99. His SP will be 91. So this is the loss of 8 rupees with respect to 99. Guys, it is approx 8% loss. ठीक है? अब पूरा मत solve कीजिए. Right? 8 with respect to 99 is what? Approx 8%. Right? 100 होता तो it is exactly 8%, but for 99 it is 8.1 something something. कुछ ऐसा आएगा. ठीक है? Guys, yes or no? ठीक है? देखिए कैलकुलेशन में मत फंसिए आप लॉजिक समझिए. राइट? कैलकुलेशन होती रहेगी. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. डोंट गेट स्टक इन द कैलकुलेशंस. यो. एवरीवन शैल वी मूव? हाँ? ओके, चलिए आगे बढ़िए जरा. हाँ जी, आप मुझे बताइए आप प्लीज इस क्वेश्चन में आप क्या अप्रोच यूज करेंगे. गाइस थिंक ऑन इट एंड ट्राई टू टेल मी द अप्रोच. मुझे आंसर नहीं जानना है. Think on it and just tell me the approach of these type of questions. हाँ जी, क्या करेंगे आप? All of you, think on it. क्या अप्रोच लेंगे? हाँ, देखिए एवरीवन, अब एक बहुत अच्छी आपने बात बोली है कि सर एक प्राइस को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया जाए. अब वो प्राइस होगा कैसा? वो 50 का भी मल्टीपल होगा और वो 40 का भी मल्टीपल होगा, तो वो एलसीएम होगा. राइट? समझिए इस बात को. देखिए लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, एसपी ऑफ 50 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 40 आर्टिकल. जस्ट अज्यूम दैट नंबर विल बी द एलसीएम. राइट? So SP of 50 article is equal to rupees 200 or CP of 40 article is equal to rupees 200, right? So SP of one article is what? Rupees 4, CP is rupees 5. Guys, now here CP is rupees 5, SP is rupees 4. What is this? This is the loss of 1 rupee, right? Means कितना परसेंट हुआ? 20%. yes.
This is 1 by 5. 1 by 5 means 20% loss. Everybody, बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है? All of you? How? Everyone clear with this? Yes. Okay. Next वाला करें? All of you? Great. Shall we come to the next question, guys? How? Okay. हटाऊं? ठीक है. देखिए जरा. The question says the CP of 21 article equal to the SP of 18 articles. हाँ जी. LCM बताइए जरा इन दोनों नंबर्स का जल्दी से. Quick. Quick. हाँ जी, what is the LCM? 126, yes. See, all of you, this is CP of 21 article equal to SP of 18 article. LCM will be 126, this is 7, this is 6, right? Guys, CP is what? CP is rupees 7, SP is what? SP is rupees 6, sorry. SP is rupees 6, this is 1 by 7. अरे यार ये CP है या ये CP of 21 आर्टिकल? यार ये CP, आई एम सॉरी गाइज, ये CP होगा, ये 6 होगा और ये 7 होगा. आई एम सॉरी, इट्स माई मिस्टेक. दिस इज 6, दिस इज 7. यार एक्चुअली मैंने यहाँ पे डिवाइड करके 7 लिख दिया था, यहाँ पे 6 होना चाहिए था. हाँ, आई मीन 1. सो गेन ऑफ 1 by 6. So 1 by 6 means 16 2 by 3%. This is the profit, right? 16 2 by 3% का profit होगा. ठीक है? Okay. Yes. Percentage पे ही based है पूरा यार ये topic, right? ओके आगे बढ़े हम. देखिए वो तो अर्थमेटिक जो है सीसैट ने हटाया, मतलब यूपीएससी ने अर्थमेटिक को एकदम इग्नोर ही कर दिया. अदरवाइज परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. वो उन्होंने इसलिए हटा दिया कि जो अदर एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी, बैंकिंग और हाँ वो उन्होंने ना उनको बिल्कुल से बाहर ही कर दिया. उन्होंने कहा कि आगे बढ़े गाइस, हम आगे बढ़े हम लोग. चलिए देखिए. यस, मुझे पहले इस क्वेश्चन का मतलब बताइए गाइस. टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज बाय सेलिंग 48 आर्टिकल्स, सॉरी 48 मीटर, आई एम सॉरी, बाय सेलिंग 48 मीटर ऑफ क्लोथ अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मीटर्स. फाइंड आउट द गेन परसेंटेज. गाइस टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट. क्या मतलब है इस सवाल का? करेंगे बाद में, पहले मुझे क्वेश्चन का मतलब समझाइए. क्या? हाँ, उसका मतलब क्या है? ओके, थिंक ऑन इट एवरीवन, थिंक ऑन इट. आराम से सोचे, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ऑल ऑफ यू. प्रीतम इज सेइंग 48 SP equal 12 CP. अच्छा, एनीवन एल्स? 60 CP of 60 meter equal to SP of 48 meter. See all of you, मैं आपको एक बात बताता हूँ. Just think on it. Question is saying by selling 48 meters of cloth, a person gains the CP of 12 meters, right? It means actually the man bought 60 meters and he already sold 48 meters. When he is selling 48 meters, actually he is coming on the break even and still he is left with 12 meters. So 12 meters is gain right now actually.
गेटिंग इट? आपको बात समझ में आई कि वो लाया था 60 मीटर, 60 मीटर वो लाया था, और जब उसने 48 मीटर बेचा तो उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो पूरा का पूरा उसने रिकवर कर लिया। अब उसके पास 12 मीटर बचा हुआ है, विच इज हिज गेन एक्चुअली। गेटिंग इट और नॉट? सो ऑल ऑफ द सिचुएशन इज here this question is trying to say CP of 60 meter is equal to SP of 48 meter. Guys, yes or no? Right? Yes or no? This is the meaning of this question. Right? Okay, now CP of 60 equal to SP of 48. What is the LCM, guys? आराम से करिए। What is the LCM? 240, right? Okay, 4 and 5. So CP is equal to 4, SP is equal to 5. This is the gain of 1/4. 1/4 means what? 25% gain. All of you clear? Okay. Any doubt, guys? आप क्वेश्चन को समझिए, राइट, रादर देन उसको याद करने की ऐसा आएगा तो ये कर देंगे, वैसा आएगा तो वो कर देंगे, ये सब नहीं, राइट? क्योंकि वैसा कभी आएगा नहीं यूपीएससी में जैसा आप सोच के जाएंगे, राइट? तो फिर आप वो कर भी नहीं पाएंगे। ओके। अरे यार वो सब याद करने वाले प्रोसेस है ना, बड़े परेशान करते हैं यार। हाँ, मिस हो गया एक्चुअली, वो आपको समझ ही में नहीं आया वो। हाँ, anyways guys, shall we move? हाँ, Pritam is saying, sir, give mic to Manvendra. What he is saying? मानवेंद्र कह रहे हैं मैं प्रीतम को नहीं बताना चाहता मैं क्या कह रहा हूँ। ऑलराइट, हाँ हाँ, क्लास कैंसिल कर दी जाए L1 के लिए। हाँ, ऑलराइट, शैल वी मूव गाइस? हम चलिए। ओके, इसको बताइए जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो चुका है? बाई सेलिंग 48 मीटर क्लॉथ, इसमें क्या लिखा हुआ? बाई सेलिंग 48 मीटर क्लॉथ। अरे यार देखो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, राइट? दिस इज द डिफरेंट क्वेश्चन। बाई सेलिंग 48 मीटर क्लॉथ, अ मैन गेन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मीटर्स। हाँ जी, आराम से करिए, बिल्कुल थिंक ऑन इट। मुझे पहले इस क्वेश्चन का मतलब बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? SP ऑफ 60 ओके इक्वल टू क्यों? वाई? ट्वेल्व मीटर का सेलिंग प्राइस का गेन हो रहा है, समझिए बात को। आराम से करिए, बिल्कुल। आराम से करिएगा, इस कोई दिक्कत नहीं है। CP of 36 ओके, एक बार रुक जाइए, मैं लिख लेता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? CP of 36 मीटर्स, SP of 48। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा, आप बताइए। वाई यू आर फीलिंग सो? क्यों लग रहा है आपको ऐसा? रीजन बताइए। ठीक है, इक्विवेलेंट आएगा। देखिए एवरीवन, एक बात समझिए, सोचिए सिर्फ इतना कि
कि उसने बेचा लाइक ही सोल्ड 48 मीटर्स and he gains SP of 12 meters. It means 48 minus 12, which is 36. So 36 meters का जो CP रहा होगा, right? 36 meters का जो CP रहा होगा, वो 48 मीटर के SP के बराबर है. Think on it, guys. Right? ये सही लग रहा है आपको? Everyone? ये सही है? पहले सोच लीजिए आप आराम से कि CP यहाँ पे आना चाहिए और SP यहाँ पे आना चाहिए या SP और CP उधर उधर होने चाहिए. थिंक ऑन इट. यस, देखिए एवरीवन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ. ये जो है ना, ये SP होगा और ये CP होगा. राइट? देखिए एवरीवन समझिए बात. हुआ क्या कि वो 48 मीटर क्लॉथ लाया मार्केट से, 48 मीटर का 48 मीटर उसने बेच दिया. ठीक, 48 मीटर जब वो बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 12 मीटर्स का, 12 मीटर का, लेकिन इस बार का सेलिंग प्राइस का. तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने नए रेट पे 12 मीटर, मतलब 12 मीटर भी नए प्राइस पे बेचा है जो सेलिंग प्राइस उसने डिसाइड किया है. यस और नो? आप सोचिए भाई, एक बात बताइए, आप 48 मीटर क्लॉथ बेच रहे हो पूरा का पूरा, आपको 12 मीटर का सेलिंग प्राइस का फायदा हुआ है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुछ सेलिंग प्राइस अपनी साइड से डिसाइड किया हुआ है, उसी सेलिंग प्राइस पे आपने पूरा का पूरा जो क्लॉथ है उसको सेल आउट कर दिया. यू आर गेनिंग 12 मीटर्स का सेलिंग प्राइस. तो एक्चुअली क्या हुआ कि 12 मीटर्स का सेलिंग प्राइस आप सोच के देखो इसमें कि 48 मीटर्स जो टोटल क्लॉथ है उसमें से 12 मीटर्स का सेलिंग प्राइस, 12 मीटर्स का SP और ये 48 मीटर का SP. इसमें से अगर आप 12 मीटर निकाल देते हैं तो 36 मीटर्स बचेगा. ठीक है, सो 36 मीटर्स का SP जब आपने किया तो आपका कॉस्ट रिकवर हो गया. अब उसके आगे आप जो कुछ भी बेच रहे हैं दैट इज योर प्रॉफिट. गेटिंग इट? So 36 मीटर का CP, sorry 36 मीटर SP is equal to CP of 48 मीटर. Getting it guys? Right? ये मतलब है इस क्वेश्चन का. Okay. So here SP of 36 equal to CP of 48. You have to decode the question first guys. What is the LCM? 144. So this is 4, this is 3. So SP is, पहले CP लिख देते हैं. CP is 3. SP is 4. What is the gain? Gain is 1/3 actually. 1/3 is 33.33%. All of you getting it or not? So try to decode the question. Try to decode the question guys. Right? Okay? इसमें confuse मत होइएगा. Right? Okay? Try to decode the question first. Okay. Yes, guys, those who are sitting online, Preetham is saying yes, sir. Okay. All of you, guys, getting it? Everybody? Okay, great. That's great. That's great. All right. So let's move, guys. ठीक है, आगे बढ़े. यस यस यस. देखिए जब उसने लिखा ना बाई सेलिंग 48 मीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाई सेलिंग 48 मतलब 48 मीटर पूरा का पूरा उसने सेल आउट किया अपने सेलिंग प्राइस पे, जो सेलिंग प्राइस उसने डिसाइड किया. ठीक है, ही इज गेनिंग द SP ऑफ 12 मीटर. तो आप इससे 12 कम कर दीजिए. सो 36 मीटर का जो CP रहा होगा, 36 मीटर जब उसने सेल आउट किया तब उसका ब्रेक इवन निकल आया, और अभी 12 मीटर उसके पास और बेचने के लिए रखा हुआ है. ऑलराइट, तो 36 मीटर सेल आउट करने पे ब्रेक इवन उसका अचीव हो गया. राइट?
नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ चुका है वो, कॉस्ट अपनी रिकवर कर ली व्हेन ही सोल्ड 36 मीटर। क्लियर? ओके, आगे बढ़िए। सो गाइस हियर यू हैव टू थिंक लॉजिकली इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ डिफ्रॉडिंग कॉन्सेप्ट गाइस, डिफ्रॉडिंग कॉन्सेप्ट आपने अक्सर सुना होगा कि आपने अक्सर सुना होगा कि यार ये वाला जो कबाड़ी वाला है ना, ये गड़बड़ करता है, राइट? या आपने सुना होगा कि ये जो सब्जी वाला है ना, ये सही नहीं तोलता है, राइट? ऐसा कुछ सुना होगा आपने। तो एनीवेज गाइस, डिफ्रॉडिंग कॉन्सेप्ट एज द नेम सजेस्ट फ्रॉड, राइट? एज द नेम सजेस्ट फ्रॉड, फाइन। So obviously fraud means what? Some malpractices, right? Some unethical practices, fine. So all of you, just think on it. Question says a shopkeeper claims to sell his goods at cost price, but he uses a false balance which shows 1 kg instead of 800 grams. Find out his gain percentage. See guys, this time the question is saying which shows 1 kg. So sometimes now these days we are actually we can see digital balance also, right? Electronic balance, right? Which is a recent balance that sabji wala or the shopkeeper use, right? They just put the article on it, right? And it shows the weight of it. देखा है आप लोगों ने? Fine. So it is like the question is talking about that kind of balance, that electronic balance. Fine. So a shopkeeper claims to sell his goods at cost price. अब ऐसा भी आपने कभी कभी शॉपकीपर्स को बोलते हुए सुना होगा कि सर जितने का लाए उतने का ही आपको दे रहे हैं, अपनी खरीद पे आपको दे रहे हैं, राइट? ऐसा सुना है आप लोगों ने? आदित्य के साथ ऐसा बहुत हुआ, आदित्य कह रहे हैं, हाँ ठीक है। सो अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, बट यहाँ पे वो कर क्या रहा है? वो एक फॉल्स बैलेंस यूज करता है। ही यूजेस अ फॉल्स बैलेंस दैट शोज 1 kg इंस्टेड ऑफ 800 ग्राम्स। तो एक्चुअली वो आपको दे 800 ग्राम रहा है, लेकिन उसके बैलेंस में शो कर रहा है कि वो आपको 1 kg दे रहा है, और वो आपसे कह रहा है मैं आपको अपनी खरीद रेट पे दे रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ डिफ्रॉडिंग। ठीक है, सो गाइस यू जस्ट डू वन थिंग, लेट CP of 1 gram is equal to ₹1. ठीक है, so CP of 800 gram equal to ₹800. CP of 1000 gram equal to ₹1000. यही होगा ना गाइस? अब मुझे आप एक बात बताइए, what the shopkeeper is saying to you? The shopkeeper is saying he is giving you 1 kg, he is giving you 1000 gram, right? And he is saying, sir, I am giving you this article at my cost price. So ideally his cost price for 1000 gram must be 1000 rupee, right? But actually what is giving to you? He is actually giving you only 800 grams. So his CP will be 800 grams. I mean 800 rupees for that, right? So his CP is ₹800, and what is his SP guys? His SP is 1000. Why? Because he is giving you ideally 800 grams, but he is charging you for 1000 gram. Correct? Fine. So this is the gain of 200 rupees out of 800 rupees. So this is 1/4. 1/4 means 25% gain. So by doing this, he is actually gaining 25%, guys. Everybody clear? सिर्फ सोचिए चीजों को, अपने आप सब सॉल्व हो जाएगा, राइट? क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, that's it. Okay? Yes, all of you. Any other doubt? Confusion तो नहीं है कोई फ्रेंड्स? Any question, any query? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस, मुझे आंसर बताएं। (11 1/9). अच्छा,
All of you? Yes, everybody. देखिए this time a shopkeeper marks up his goods by 20%. See, in the last question the shopkeeper was saying, sir, I'm giving you this article at my CP. This time the shopkeeper is saying, sir, I'm giving you this article at 20% profit, कि मैं इसमें 20% बचा रहा हूँ, right? So now the thing is, CP of 1000 grams will be rupee 1000, yes or no? Huh? And CP of 900 grams would be what? Rupee 900, correct? And the shopkeeper is actually saying he is marking up his goods by 20%, correct? So the thing is, the quantity that he purchased for rupees 1000, right, he will be writing 1200 on it as the MRP, yes or no? ठीक है, right? 1 kg का मान लीजिए शुगर का पैकेट है, वो उसको 1000 रुपीज़ का लाया मार्केट से, तो वो उसमें 1200 रुपीज़ लिखेगा और वो आपको बोल भी रहा है कि मैं आपसे 20% का प्रॉफिट ले रहा हूँ, correct? But guys, when he is selling you that article, he is not giving you the entire 1000 gram. He is giving you what? He is giving you 900 gram because his balance shows 1 kg instead of 900 grams. So he is actually giving you only 900 grams, and for that 900 grams, his CP must be 900 rupees. Yes or no? He must have purchased that 900 gram for rupees 900, but he is charging 1200 rupees for that, correct? So his CP will be rupees 900 and his SP will be rupees 1200. So his gain, actual gain is rupees 300, right, which is 1/3. 1/3 means what? 33.33%. Guys, ठीक है, this is his actual gain, correct? All of you fine now? Everyone? सिंपल है ना बिल्कुल? ठीक है, आगे बढ़ जाएं? चलिए, shall we move? All of you? ठीक है, चलिए. Yes. Tell me the answer for this question. A grocer sells rice at 20% profit and uses a weight which is 25% less. Find his total percentage gain. करें जरा. Yes. This total percentage gain. Pritam is saying 60%, Ujjwal is saying 60%. Okay. Anyone else? Any other answer? 60%? All right. See guys, the thing is, he uses a weight which is 25% less, right? So it means for 1000 gram, when the weight, actually the balance is showing 1000 gram, it is actually only 750 grams. Yes or no? 25% less. Yes? He is actually giving you 750 grams, but he is claiming to give you 1000 gram because his balance is showing it is 1000 gram. Correct? And he is claiming a profit of 20%. So obviously, he is actually giving you 750 grams. So his CP must be 750, but he is charging that, I mean, he is charging 1200 rupees for that. Why? Because he is taking a profit of 20%. Guys, yes or no? So this is what? This is 450.
3:5, 60%, yeah. Right, 150 into 3, 150 into 5, 3:5. So this is 60%. 3/5 है ना ये इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, 60% गेन, करेक्ट है आपका आंसर. Yes. All of you done? Your answer is right. Everyone fine now? ठीक है, चलते हैं आगे. Now let's move to the next question. Next question says a tradesman defrauds to the extent of 10% in buying the goods and also defrauds to the extent of 10% in selling the goods. Find his profit percentage. See, all of you, suppose that an article cost rupees 100, right? Because percentage की बात आ रही है तो मैं 100 assume कर रहा हूँ. Suppose that an article cost rupees 100. So when he is buying that goods, buying that article, so he is actually making a fraud of 10%. It means he is purchasing this good, this article at 10% less price, 90 rupees. So his CP will be rupees 90. But when he is selling this article, he is making a fraud of 10% again. So he is selling that article for 110 rupees. Correct? So what is his gain? 20 rupees out of 9 rupees. So 2 by 9. 1 by 9 is 11 1 by 9. So 2 by 9 is 22 2 by 9, right? So his gain is 22 2 by 9%. Everybody clear? Simple question. Yes guys. All of you? It's clear now. Anyone? Any confusion? Any doubt? Any query? No? Fine? Okay. All right. Chaliye. Shall we move? All of you? ठीक है, great. चलिए इधर आगे बढ़ जाइए. ये देखिए, हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी ना कि कभी कभी प्रॉफिट या लॉस जो है गलती से एसपी पे लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट? ठीक है. जस्ट रीड द फर्स्ट एग्जांपल. Question says by mistake a shopkeeper calculates his profit on selling price and claims to make a profit of 20%. Find his actual profit. Guys, the question says by mistake a shopkeeper calculates his profit on selling price and claims to make a profit of 20%. Find his actual profit. Right? So by mistake a shopkeeper calculates his profit on selling price. So just assume that selling price is rupees 100. Guys, yes or no? Correct? And 20% of this will be what? 20 rupees. So CP will be 20 rupees lesser than this, right? See, all of you, the situation is he purchased that article for rupees 80, he sold it for rupees 100 and his profit was rupees 20. So instead of calculating 20 is what percentage of this, by mistake he calculated 20 is what percentage of this and claims to make a profit of 20%. So if you rectify that error, so obviously you will be calculating 20 is what percentage of 80. Yeah, this is 25%, 1/4, right? So his actual profit, क्या loss है? हाँ, his actual profit was 25%. Guys, correct? Simple question. Actually a very simple question, guys. Right? ठीक है. Next, इसको आप करें. चलिए. A shopkeeper calculates his loss on selling price by mistake and claims a loss of 25%. Find his actual loss. Guys, tell me the answer. आराम से करें. बिल्कुल आराम से करें. 20%? Shall we move, guys? देखिए everyone, a shopkeeper calculates his loss on selling price by mistake. So 100 rupees. How? And claims a loss of 25%. See, all of you, if this is SP
Up this time it is a loss. So CP would be what? CP would be more than this. Right? Guys, yes or no? Huh? So actually he purchased that article for rupees 125 and sold it for rupees 100. So his loss is 25 rupees. So ideally he should have calculated 25 is what percentage of this, but by mistake he has calculated 25 is what percentage of this. Getting it? और मैं इसको इधर लिख दूं तो आपको ऑर्डर सही लगेगा देखने में. ठीक है अभी? He bought that article for rupees 125, but he sold it for rupees 100. So his loss is 25. So ideally he should have calculated 25 is what percentage of this. ठीक है? So the answer is 20% loss. Guys, clear? Everybody fine? Okay. It is 25% loss. Sorry, 20% loss. I'm sorry. ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए जरा. ये एक कॉन्सेप्ट है गाइस, इसको लिख लीजिए जरा. If SP of two articles is same, on first article there is a gain of X%, while on other article it is a loss of X%. Then overall there is a loss of X square by 100%. आप इसको लिख लीजिए प्लीज. Yes, all of you. लिख लिया आप लोगों ने? If the SP of two articles is same, on first article there is a gain of X% and on second article there is a loss of X%. Then overall there is a loss of X square by 100%. Right? Okay. आगे बढ़े? Everyone? Okay. All right. So guys, just read this question. The question says a man sold two flats for this each. On first he gained 16%, while on other he lost 16%. How much does he gain or loss in the entire transaction? Right? मुझे ये बताइए, इसमें x की वैल्यू क्या है? 16%. So the answer is the loss of x square by 100% actually. ये आंसर है. ठीक है? So this is 16 square by 100%. What is the answer? 2.56. This is loss. Right? Guys, clear? हो गया? उससे कोई मतलब नहीं है. X square by 100% बस. एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतने परसेंट का लॉस होना चाहिए, नंबर वन. एंड सेकेंड कंडीशन इज एसपी दोनों का सेम होना चाहिए. राइट? राइट? एसपी हैज टू बी सेम एंड ऑन फर्स्ट आर्टिकल द लॉस ऑफ X%, ऑन सेकेंड आर्टिकल देयर मस्ट बी अ गेन ऑफ X% और वाइस वर्सा. राइट? सो यू जस्ट अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन. Right? Clear everything? It's fine? Yes. Okay. Guys, now let's move to the next question. हाँ, करिए जरा इसको. Yes. A man sold two articles. भाई इसमें रुपीस पूछा गया है. उज्जवल, they have asked the question in terms of rupees. Ujjwal is saying 4%. But Ujjwal, they have asked in terms of rupees. All right.
Guys, what is the answer? I'm waiting for your replies. 48? Okay. I'm getting one answer is 48. Anyone else? Any other answer? Anulekha is saying 50. Okay. Yes, guys, any other answer? Anyone else? अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ी देर के बाद सब कुछ जान जाऊंगा. Yes. Ginny is saying rupees 50. Okay. All right. 50 is written. Yeah. Okay. Shall we discuss, guys? Discuss करें? Okay. All of you मुझे एक बात बताइए. 4% gain, 4% sorry 20% gain, 20% loss. So obviously 20 square by 100 ka loss is overall, which is 4% loss. Right. Guys, 4% loss means what? Just go back to basics. 4% loss means what? Huh? SP equal to 96% of CP, guys. Huh? So 96% of CP is equal to what? 600 plus 600, which is 1200. Huh? So 96% is equal to 1200, then 100% is equal to what? This is 1 by 8 followed by 2 zeros. So this is 1250. Yes. So guys, CP is 1200. Sorry, CP is 1250. SP is 1200. So there is a loss of 50 rupees. Right? 50 rupees. It's a good question, guys. It's a very good question. आपको 600 क्यों लेना था भाई? A man sold 2 article. Question पढ़िए. Right? Each for 600 लिखा हुआ है ना? Each. Each for 600. Right? Clear, guys? Okay, that's a good question. All right, let's move. हाँ, आगे बढ़े मानवीन, ठीक है. प्रीतम आपका हो गया है? चलिए ठीक है. Unitary method, guys. Unitary method we have already discussed in percentage, right? So the process is clear. What we need to do is we need to find, we need to assume a convenient value from our side, which is 100 most of the time, right? And we need to follow the instructions of the question. Finally, question will give you one value, and we also have one value. Then we will equate both the values, and you will get the correct answer, right? Just read this question, guys. The question says a man sold his watch at 5% loss. If the selling price had increased by 2000, there would have been a gain of 15%. Find out the CP of the watch. कहने का मतलब ये है कि CP of the watch, let's say it is 100%. वो ये कह रहे हैं कि एक पर्सन ने अपनी वॉच बेच दी 5% लॉस पे. अगर वो 2000 रुपये बढ़ा के बेचता तो उसको प्रॉफिट होता 15% का. ये क्वेश्चन है, राइट? तो SP1 is equal to 95% of CP. Guys, yes or no? SP2 is equal to 115% of CP. What is the difference between those two values? The difference is 2000. Question says. And what is the difference according to you? It is 20%. Right? So 20% of the CP of the watch is rupees 2000. 10,000, yeah. Then 100% is what? 10,000. 100% is what? It is 10,000. Guys, correct? Anyone? Any doubt?
Any confusion, any query? ठीक है? Okay. All right. Shall we move? हाँ? चलिए आगे बढ़ते हैं. बढ़ जाए? Question says a man sells an article at 25% profit. If he had bought it at 20% less and sold it for 10.5 rupees less, there would have been a gain of 30%. Find out the CP of the article. देखिए all of you, मैं करता हूँ इसको, थोड़ा सा different question है ये. लिखा हुआ है a man sells an article at a profit of 25%. So this is CP, this is SP. ठीक है? If he had bought it at 20% less, right, and sold it for इतना less, he would have gained 30%. Guys, 30% के gain का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये बताइए जरा. 30% का gain out of this now. So 30% of this is 24. So this is 104. Now guys, the difference between these two price is given as 10.5 rupees less. लिखा हुआ है question में, right? According to you, what is the difference between these two? 21. Question says it is 10.5. So 21% is equal to 10.5. What is the relationship? Half. So 100% is equal to what? What is the relationship, guys? 50. Right? The answer is 50 rupees. Everybody, yes or no? Aditya, what is the confusion? हाँ, clear हो गया? Very good. Very good guys. Clear है तो note करिए फिर. Okay. Yes, everyone done? All of you? Shall we move now? Okay, chaliye. Next question. A man sells an article at 25% profit. Had he purchased it for rupees 900 less and sold it for rupees 900 less, he would have gained 5% more profit. Find out the CP of the article. Right? कैसे करेंगे इसको? क्या सोचेंगे इसमें? ठीक है, 100 मान लेंगे फिर. उसके बाद देखिए, ठीक है. See, all of you, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ऑलमोस्ट है वैसा ही. अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट. दिस इज सीपी, दिस इज एसपी. ठीक है, राइट. इफ ही हैड परचेज इज फॉर रुपीज 900 लेस, वही कह रहे हैं अगर इतने का खरीदा होता और इतने का बेचा होता, ठीक है, तो ही वुड हैव गेन्ड 5% मोर. मुझे बताइए यहां पे प्रॉफिट कितना है गाइस? 5% मोर का मतलब क्या है? 30% का प्रॉफिट होता. ठीक. इट मीन्स गाइस दिस एसपी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 130% ऑफ दिस वैल्यू. राइट? ओके. So 125% minus 900 equal to 130% of this, right? So 130% of this means this into 130 by 100, right? All of you, yes or no? बोलिए आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
अब कैलकुलेशन हो जाएगी, अब मैं छोड़ दूं, अब कर लीजिएगा ना राइट। अदरवाइज बुक में भी सोल्यूशन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। गाइस एनी कंफ्यूजन ये बताइए। वो ये कह रहे हैं 5% मोर का प्रॉफिट होता यहाँ पे, सेकेंड केस में द प्रॉफिट वुड हैव बीन 30%. So this time SP is equal to 130% of CP. So SP is this is CP and 130%, right? 100% निकालना होगा ना, फाइंड द CP. CP 100% है ना, ये निकालना है आपको. क्या हो गया मानवीन? कर दूं क्या मैं पूरा? हो जाएगा वो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? ओके, ऑलराइट. लॉजिक पे फोकस करिएगा इस, बस सिर्फ लॉजिक पे, बाकी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा. ठीक है? ओके, शैल वी मूव गाइस? हाँ चलिए जरा. Pritam is saying, sir, your way of thought always motivates us to think differently. Oh, वैसे प्रीतम ने एक दिन एक क्वेश्चन कर दिया था, पहले ग्रुप में डाला और बाद में लिखा कि मैंने सेल्फ मेथड से सॉल्व कर दिया. That's good, Pritam. I appreciate it. Yes. Shall we move now? हाँ? Shall we move? चलिए. Oh, reverse ratio. See guys, reverse ratio is what? इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे. ठीक है, आ भी रहे हैं थोड़े थोड़े. देखिए क्या होता है, समझिए. इफ सॉरी if A% of X is equal to B% of Y. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. X, Y इसका A% इसके B% के बराबर हो जाएगा. I repeat, if A% of X is equal to B% of Y, then ये इसके रिवर्स मैनर में चला जाएगा. Then X is to Y is equal to B is to A. ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स रेशियो, राइट? ये रिवर्स हो गया ना. एंड व्हाई इट इज बिकमिंग रिवर्स, लेट मी शो यू. दिस इज व्हाट x इंटू a बाई 100 होगा. दिस इज व्हाट b इंटू y बाई 100. कैंसिल हो गया. सो एक्स ए इक्वल टू बी वाई. सो x बाय y is equal to b by a. Everybody clear? So x is to y is equal to b is to a, right? So if A% of X is equal to B% of Y, then X is to Y is equal to B is to A. This method is known as reverse ratio method. Profit loss भी हो सकता है. Let's say interest वाले questions भी इसमें से आ सकते हैं, कि मान लीजिए उसका बैंक जो है 5% इंटरेस्ट दे रहा है, आपका बैंक 12% इंटरेस्ट दे रहा है, बट दोनों का अमाउंट सेम है. थोड़ी देर के लिए, राइट? क्लियर गाइस? तो जहां कहीं ऐसी सिचुएशन बनेगी तो ये रिवर्स रेशियो का क्वेश्चन होगा. ठीक है, एवरीबॉडी फाइन नाउ? ठीक है, ओके. एक्स वाई से मतलब नहीं, एक्स वाई तो कुछ भी हो सकता है. जब इसके A% की वैल्यू इसके B% के बराबर हो जाएगी, जो फाइनल वैल्यू है जब वो बराबर होगी. समझ गए? जो अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे ना मानवेंद्र, कि SP को CP बना दो, CP को SP बना दो, ये एक्चुअली ये रिवर्स रेशियो कर रहे थे. बहुत चीजें आप अनजाने में कर देते हैं जिंदगी में. यस, चलिए. सो गाइस, शैल वी मूव नाउ? हाँ, आगे बढ़े. यस, बहुत जरूरी. yes. नहीं, एक्चुअली हालत से ज़्यादा ना आपकी लाइफ खराब हो रही थी एक्चुअली. सही बताओ, एग्जाम एक अलग चीज़ है गाइस. आप पढ़िए लाइफ के लिए,
एग्जाम के लिए पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, एग्जाम तो आते जाते रहेंगे। हाँ, यूपीएससी को एक्चुअली क्या है कि यूपीएससी प्रिपरेशन जो है ना, एक प्रिपरेशन जो जर्नी है ना, इस जर्नी से जब आप होके निकलेंगे तो यू विल बी टोटली अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो वो ज़रूरी है, पढ़ाई को आप पढ़ाई की तरह करें ना तो आपको बहुत फ़ायदा देगी वो लाइफ के किसी भी फील्ड में आपको फ़ायदा देगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई की तरह हो नहीं रही है। अदरवाइज पढ़ाई का ये पर्पस थोड़ी ना है कि एक ग्रेजुएट करके बच्चा जो है अनएम्प्लॉयड हो जाए, समझिए आप बात को, राइट। तो ये पर्पस नहीं है। लेकिन आज अगर आप कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट का इंडेक्स उठा के देखेंगे तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसका मतलब यही है ना कि एजुकेशन जिस पर्पस के लिए एजुकेशन को बनाया गया था वो पर्पस डिफीट हो रहा है, और वो पर्पस इसलिए डिफीट हो रहा है बिकॉज एजुकेशन बहुत गलत तरीके से इम्पार्ट की जा रही है। अरे खैर वो एक अलग चीज़ है। देखिए वो बिजनेस किसी का कुछ भी चॉइस का बिजनेस हो सकता है, वो कोई बात नहीं। जैसे कि मान लीजिए रिलायंस फ्रेश भी तो सब्जी बेचता है ना, तो अडानी मतलब अंबानी भी तो सब्जी बेच रहे हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एक चॉइस ऑफ बिजनेस है, राइट। वो उसको बड़ा कर सकते हैं। अब हल्दीराम जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हल्दीराम में भी तो पानी पूरी मिलता है, राइट। तो खैर वो एक अलग चीज़ है। हाँ, यस, एनीवेज चलिए, ओके गाइस आगे बढ़ें जरा। हाँ एवरीबॉडी, ठीक है। देखिए ये एंडलेस डिस्कशन है, आप लोग भी बहुत परेशान हैं अंदर से, तो आप बोलते चले जाएंगे, मैं सुनता चला जाऊंगा। ठीक है, मैं ही आपकी बात सुन सकता हूँ। यस एवरीवन, लेट्स मूव। चलिए गाइस, रीड दिस क्वेश्चन। सबसे पहले सवाल को पढ़िए। लिखा हुआ है अ पर्सन बॉट 2 वॉचेस फॉर ₹960। देखिए 960 ईच नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 960 में 2 वॉच हैं, ठीक। अ पर्सन बॉट 2 वॉचेस फॉर ₹960. He sold one at a loss of 20% and other at a gain of 60%. He found that the SP, मतलब each watch was sold at the same price, so SP of each was same. Find out the CP of the 2 watches. ठीक है एवरीवन, एक बात समझिए जरा, मुझे ये बताइए SP1 equal to 80% of CP1। SP तो दोनों बराबर है, ठीक है। तो CP करना होगा यहाँ पे, रुकिए, CP1 एंड CP2। मुझे ये बताइए ऐसा है या नहीं, पहले ये बताइए आप ऑल ऑफ यू, ऐसा है या नहीं? Everybody, 80% of CP1 is equal to 160% of CP2, ऐसा है या नहीं? क्योंकि first watch was sold at 20% loss, so it must be 80% of its CP, and second was sold at 60% profit, so it was 160% of its CP. Correct? So the ratio between these two values will be 160:80, that is 2:1, right? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों वॉच मिलाकर के आपने 960 रुपीज की परचेज की, ठीक है, ठीक है, राइट। अब 960 को व्हेन आई डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 2:1, देन दिस इज 332 into 3 is 96, so 640 and 320, so CP1 is equal to 640, CP2 is equal to 320, ठीक है। फर्स्ट वॉच का जो सीपी है वो 640 है और सेकेंड वॉच का जो सीपी है वो 320 है। क्लियर? आ गया समझ में? राइट? सिंपल क्वेश्चन गाइस, एक्चुअली अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी भी दिखे ना तो इनको ऐसे टैकल करिएगा, ठीक है।
ओके चलिए जरा. So this was the difference division method, guys. Sorry, this was what? This was reverse ratio method. Now the next method would be difference division. नोट कर लिया आप लोगों ने? क्या? हाँ, जो प्रोसेस है, I mean जो आइडेंटिफिकेशन है क्वेश्चंस का, वो ये है कि दोनों का मतलब वैल्यू जो है कि इसका इतना परसेंट इक्वल टू इसका उतना परसेंट, ये आपको दिखना चाहिए वहाँ पे. भाई एसपी क्या है? एसपी इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीपी. ठीक है, एसपी इज सेम इन बोथ द केसेस. हाँ, एसपी इज सेम इन बोथ द केसेस लिखा हुआ है ना. एसपी इज सेम इन बोथ द केसेस एंड एसपी इज व्हाट? इट इज अ सर्टेन परसेंट ऑफ सीपी ओनली. ठीक है, ओके. एवरीबडी क्लियर? ऑल ऑफ यू? एवरीवन? Those who are sitting online? Okay. Shall we move, guys? All right, good. Okay, chaliye. Now the last concept is difference division method. Guys, difference division. As the name suggests, the difference will be divided into some ratio or into some parts, right? Difference division, right? So just read this question, guys. Question says the profit earned by selling an article for rupees 832. The profit earned by selling an article for rupees 832 is equal to the loss incurred when the same article was sold for rupees 448. What will be the sale price of the article for making 50% profit? Everyone just ignore this question for the time being and tell me one thing. I am doing this question a bit simpler for you, right? मुझे एक बात बताइए. If I say by selling an article for rupees 30, some profit is occurred and that profit is same as the loss when the same article is sold for rupees 10. I repeat. मैं ये कह रहा हूँ एक आर्टिकल को 10 रुपए में बेचने पे जितना लॉस हो रहा है, उस आर्टिकल को 30 रुपीज पे बेचने पे उतना ही प्रॉफिट हो रहा है. गेटिंग इट? आई रिपीट द क्वेश्चन. एक आर्टिकल को 10 रुपीज पे बेचने पे जो लॉस हो रहा है, उस आर्टिकल को 30 रुपीज पे बेचने पे उतना ही प्रॉफिट हो रहा है. इस बात का मतलब समझते हैं आप? थिंक ऑन इट गाइस. नहीं, वो तो मैं कह ही रहा हूं, प्रॉफिट सेम है लॉस के, लेकिन इस बात का मतलब ये है कि वो जो वैल्यू है, जो सीपी है ना, वो इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों वैल्यूज से. वो एग्जैक्टली अर्थमेटिक मीन है इन दोनों का, राइट? अब बात को समझिए, यहां पे प्रॉफिट इज सेम एज लॉस, दैट्स व्हाई दिस डिफरेंस हैज बीन डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:1. करेक्ट? अब अगर मैं कहता कि लॉस जो है वो प्रॉफिट से डबल हो रहा है, तो फिर ये डिवाइड हो जाता 1:2 के रेशियो में. आप समझ पा रहे हैं? या मैं कहता वो 4 टाइम्स हो रहा है या 3 टाइम्स हो रहा है, तो वो डिवाइड होता 1:3 के रेशियो में. गेटिंग इट एवरीवन? सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज डिफरेंस डिवीजन मेथड. करेक्ट? नाउ अब आप मुझे बताइए जरा, सबसे पहले यहाँ पे सीपी क्या होगा? आप पहले बताइए होगा क्या. आंसर नहीं चाहिए मुझे बताइए सीपी होगा क्या. रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी सीपी होगा क्या. आंसर नहीं चाहिए मुझे बताइए. यस, सीपी वुड बी द एवरेज ऑफ दीज टू वैल्यू 832 and 448. Yes or no, guys? Everyone, online students, guys, yes or no? CP would be the mean of these two values. So mean of these two values is what, guys? 832 plus 448 divided by 2, right? What is this? 1280. 1280 by 2, हाँ, 640. ठीक है. 640 is the CP of the watch. क्या लिखा हुआ है? वॉच क्या है? आर्टिकल. ठीक है, जो भी आर्टिकल है, 640 is the CP. ठीक है. Now what are they asking? 50% प्रॉफिट पे बेचना है अगर आपको इस आर्टिकल को, तो इसका 50% क्या होगा? 320 होगा ना. 320 ऐड कर दीजिए इसमें आप.
So 150% of CP 960 कितना हो जाएगा 960 राइट डन डन गेटिंग इट एवरीवन सो दिस इज द डिफरेंस डिवीजन मेथड राइट ओके आपको ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में दिखेंगे कुछ कुछ गाइस क्वेश्चन नंबर 4 खोलिए जरा पेज नंबर 163 पे पेज नंबर 163 पेज 163 क्वेश्चन 4 ये है शायद 2018 का यूपीएससी का CSAT 2018 solve this question guys solve this question and tell me the answer आराम से करिएगा हाँ everybody what is the answer हाँ कुछ नहीं करना है यार उसमें कुछ हाँ लेकिन वो बाई चांस की बात है कि वो 1:1 है इसलिए वो मीन हो गया वो अगर कह देता कि लॉस जो है प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स है आप समझ रहे हैं एवरीवन इधर देखिए अगर मान लीजिए 40 रुपीज एंड 20 रुपीज इसका डिफरेंस कितना है 20 रुपीज हाँ अब वो कह दे कि लॉस जो है वो प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स है राइट 20 रुपीज पे बेचने पे जो लॉस हो रहा है 40 रुपीज पे बेचने पे कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स है इफ द क्वेश्चन सेज लाइक दिस सो दिस डिफरेंस वुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो 1:3 डिफरेंस इज व्हाट 20 राइट सो 20 को अगर आप 1:3 में डिवाइड करेंगे तो 5 and 15 आएगा बोलिए यस और नो so the CP of the article guys the CP of the article is actually situated 5 divisions I mean 5 this is 5 less than this or this is 15 more than this the answer is 35 got it so here it is 5 here it is 15 so this time the CP would be 35 right CP would be 35 and when you are selling that article profit is 5 rupees when you are selling that article for rupees 20 the loss is 15 rupees so the loss is actually 3 times of the profit correct so this method is difference division method guys clear now स्टेटमेंट में ये लिखा होगा ना कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट और लॉस इक्वल है सेम लिखा हुआ है ना वहां पे वो लिखेंगे कि जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स है हाँ वो इंटरचेंज तो हो ही सकता है यहाँ पे प्रॉफिट अगर 3 टाइम्स हो जाता सपोज दैट अब क्या होता यस 3:1 तो 25 आंसर होता फिर उस केस में गॉट इट क्लियर राइट ऐसा कोई बुक में होगा एग्जाम्पल में नहीं है मतलब प्रैक्टिस सेशन में है राइट मैं आपको दिखा देता हूं अगर आपको प्रैक्टिस सेशन में ऐसा क्वेश्चन देखना है ना एवरीवन ये क्या डिफरेंस डिवीजन है ना पेज नंबर 161 पे जो है पेज नंबर 161 क्वेश्चन नंबर 33 जरा कर दीजिए जल्दी से एवरीवन पेज 161 क्वेश्चन 33 डू इट फास्ट आप इसको देख के मुझे आंसर बता सकते हैं वैसे पहले मुझे सीपी बताइए गाइस अच्छा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन मुझे सीपी बताइए पहले ऑल ऑफ यू सीपी बताइए पहले अरे 200 100 क्या होता है सीपी बताओ सीपी आर्टिकल का कितने का परचेज किया था आर्टिकल ये बताओ कितने का परचेज किया था आर्टिकल 200 100 क्या होता है हाँ
कितने का परचेज किया था? मुझे 300/3 से मतलब नहीं है, पहले बताइए आर्टिकल आपने कितने का परचेज किया था? 900 का। अच्छा, मैं कह रहा हूँ परचेज कितने का किया था, तुम कह रहे हो सेलिंग प्राइस। यस एवरीवन, आर्टिकल कितने का परचेज किया था? नॉनसेंस यार। आर्टिकल कितने का परचेज किया था? तुम लोग जो है ना अच्छा 500, दिमाग सही नहीं है तुम लोग का। इधर देखो, इधर देखिए प्लीज, ऑल ऑफ यू इधर देखिए। क्वेश्चन का डेटा बताइए प्लीज, बताइए। बोलिए। 900 रुपीज को बेचने पे कुछ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और ठीक है, डबल द लॉस, ठीक है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये हुआ प्रॉफिट जो है वो लॉस के कंपैरिजन में डबल है, वो यही कह रहे हैं ना क्वेश्चन में। तो मुझे एक बात बताइए, सीपी यहां पे कहीं सिचुएटेड होगा 2:1, क्लियर। अब इसका डिफरेंस है कितना? 300 है ना। 300 को अगर आप 2:1 में डिवाइड करते हैं तो 2:1 बनेगा 200 and 100, सो 700 इज द सीपी ऑफ द आर्टिकल, राइट। मैं ये पूछ रहा था बार बार आपसे कि आपने आर्टिकल परचेज कितने का किया, मुझे ये बताइए, राइट। 700 is the CP of the article, guys. Now the question says, what is the selling price when the profit is 40%? So 700 का 40% कितना हुआ? 280। क्या 40% पूछा है, क्या पूछा है? 40%। ठीक है, तो 700 का 40% कितना हुआ? 280, ठीक है। तो 700 प्लस 280, दिस इज 980, खत्म हो गया। जो डेटा आपने बताया उसके हिसाब से, और जो डेटा मतलब मुझे बताइए कि डबल द लॉस, हाँ ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा गाइस। मुस्कान इज सेइंग 800, आकाश इज सेइंग 1080, इज इट गाइस? ये सही है या जो आपने निकाला वो सही है? चेक कर लीजिए जरा, मुझे लग रहा है यही है। हाँ आकाश, सर आप ये बता दें सीपी इसके पास होगा, वो कैसे करें? अबे यार तुम एक चीज बताओ, लॉस जो है उसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट डबल हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये इधर की तरफ होगा कि नहीं, मतलब इससे ज्यादा क्लोज होगा ना, ठीक। अब ये अगर इसका डबल है तो ये 2:1 होगा कि नहीं होगा? इसमें क्या परेशानी है यार, कितना छोटी सी चीज, ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं यार, ये सब तो। हाँ तुम पूछ क्या रहे हो? हाँ क्या पूछ रहे हो तुम? हाँ जैसे आपने पूछा प्रॉफिट का ट्वाइस है लॉस, प्रॉफिट ट्वाइस है, लॉस ट्वाइस है, प्रॉफिट ट्वाइस है, प्रॉफिट ट्वाइस, हाँ। इन डाटा के कैसे सेट करेंगे इस चीज को, प्रॉफिट है? अरे यार एक वैल्यू यहाँ पे है, सीपी देखो, सीपी यहाँ पे है। आपसे एक चीज साफ साफ क्वेश्चन में कही गई है, 600 पे बेचने पे लॉस हुआ है, 900 पे बेचने पे प्रॉफिट हुआ है, ये बोला गया है ना, ये तो बोला गया है ना। तो अब इसके बीच में कहीं ना कहीं सीपी एग्जिस्ट कर रहा है कि सीपी के कंपैरिजन में ये वैल्यू लेसर है और सीपी के कंपैरिजन में ये वैल्यू मोर है। ये बात तो आपको समझ में आती है कि नहीं आती? राइट, अभी क्लियर हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। यस एवरीवन, ऑल राइट गाइस, गेटिंग इट? तो ये डिफरेंस डिवीजन मेथड है। हाँ कितना बेसिक है, समझ रहे हैं आप? हाँ कह रहे हैं इतना भी बेसिक नहीं है सर। चलिए, ऑल राइट। सो मुझे लगता है अब ये हो गया है टॉपिक। अब इसके बाद इसमें मिसलेनियस बचे हुए, मिसलेनियस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मिसलेनियस में मतलब जो हमने पढ़ा है उसी का सब मिक्सचर है, ठीक है, तो वो हो जाएगा, राइट। सो गाइज दिस टॉपिक इज ओवर। सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग जो है परमुटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और या तो फिर मंडे को छोटा सा एक टॉपिक है डीआई। गाइज डीआई को करें या क्या करें?
करें DI को, ना करें ये सब बाद में देखेंगे। DI बाद में देख लें, पहले परमुटेशन कर लें। ठीक है, तो पहले परमुटेशन करते हैं, राइट? ठीक है, परमुटेशन करते हैं। ऑल ऑफ यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए? अच्छा, प्रीतम कह रहे हैं सर DI छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे DI को पिछले कई सालों से पूछा नहीं जा रहा है, ये बात सही है। दे आर नॉट आस्किंग DIs। चलिए लास्ट में थोड़ा सा एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। हालांकि ये बात सही है कि DI हैज़ नॉट बीन आस्क्ड सिंस पास्ट 3-4 ईयर्स, तो नहीं पूछा जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। 2018 में उन्होंने बहुत दबा के DI पूछा था, और उसके हाँ कर लेंगे उसको भी। ऑलराइट गाइस, सो यस सो ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन गाइस फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। हाँ चलिए, सो एवरीवन थैंक यू गाइस, मंडे को मिलते हैं हम लोग विद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।